by Leland Blank. So learning outcome in this chapter, public sector projects, difference between the public calculation of the benefit cost ratio for a single project and the selection of the alternatives by using the incremental benefit cost analysis. So mainly we have to calculate the benefit cost for a single project and the selection of the alternatives using the incremental benefit cost ratio. Okay, what is the public sector project? It is the product, service, or the system used, financed, and owned by the citizens of any government level. Okay. Purpose of a sector project is to provide the service to the citizens. And the examples are given here. It can be the public health project, criminal justice, safety, transportation, welfare. So different kind of public sector projects are given on the next slide. So before to discuss the public sector project, any student can define the project. What is the project? We have studied this one in Madam Aksar's class, the definition of the project. It's important to understand the project. So I hope everybody knows what is the project. Any student? प्रोजेक्ट क्या होता है सर इंडिविजुअल एक्टिविटीज जिनका एक ही पर्पस हो, जिनका एम एक ही चीज काम की तरफ हो, लेकिन एक्टिविटीज इंडिविजुअल ग्रुप्स। कितना बात कह रहे हो आप बेटा? जी सर। कितना बात कह रहे हो जी? फिदा यस सर। क्या कहना चाह रहे हो सर? जी इसका प्रोजेक्ट का मतलब कि ऐसा काम जिसमें इंडिविजुअल ग्रुप्स काम कर रहे हो और उनका एक ही पर्पस हो और एक ही काम की तरफ एम हो उनका, उसको प्रोजेक्ट नहीं। This is not the correct definition. Not exactly. ऑपरेशन में भी दो तरह की चीजें होती है ना। एक तो ऑपरेशन होता है जिसमें आपकी जो प्रोजेक्ट में डिफरेंस होता है। ये आपने डिस्कस किया होगा, मैडम अक्सर ने डिटेल में आपको डेफिनेशन बताई होगी और डिस्कस किया होगा क्लास। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट तो आपको आनी चाहिए एनी स्टूडेंट। हिंट में आपको दे देता हूं, इट हैज द स्ट्रेस फिदा। प्रोजेक्ट इज यूनिक, it needs the resources, okay, and it has a specific duration, starting time and the ending time. Need the resources. Okay sir। क्या ख्याल है? इस तरह की डेफिनेशन पड़ी हुई है आपको, आया ज़हन में कि नहीं? ये कंडीशन सर ठीक है सर, ये अच्छी है। I'm not discussing about the project, जैसे मैं आपको चेक कर रहा था आपको ज़हन में है प्रोजेक्ट की डेफिनेशन या नहीं है। So anyhow, these are the public sector projects: hospital, clinics, parks, recreation, utilities, schools, economic development projects, convention centers, waterways, public housing, all. Okay, look at the 14 codes and standards. Is this one the project or not? Preparation of codes and standards. And then the last one, the job training. Is it the project or not? हो सकता है ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है नहीं यार, वो तो आपको श्योर होना चाहिए। आपने कंप्लीट कर लिया कोर्स और आपको बिल्कुल सर होगा एक्सपर्ट्स नो होगा क्या मतलब? जॉब ट्रेनिंग, प्रिपरेशन ऑफ कोड्स एंड स्टैंडर्ड, ये प्रोजेक्ट है कि नहीं? जस्ट इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ है कि नहीं? है। किस तरह है, चले ये बताएं। सर अभी हमने जॉब ट्रेनिंग का कोई मतलब काम शुरू किया, जिस तरह के हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई 30 ट्रेनिंग है, उनको हमने इतनी डेडलाइन तक ट्रेनिंग देनी है और ये काम उन्हें सिखाना है और ये हम टीचर हायर करेंगे, इस तरह का वो सारा करके तो एक तरह का प्रोजेक्ट ही बन जाएगा। दिस इज द प्रोजेक्ट, having the starting time, ending time, need the resources, and
At the end, you have some facility, ठीक है ना? That will be a service to the public. So all these projects which are listed on this page, these are the public sector projects. Some are the construction project, they are useful, okay, for the public. So all these on this slide, they are the public sector projects. Job training is a project, and job training for the citizens of arranged by the government, that is the public sector project. Okay, difference between the public sector and private sector projects. Public sector projects are normally very large, okay? And the private sector projects, some are large, but most of them are medium to small. So if the public sector projects are large, they need huge initial investment. Any kind of the public sector project, you can see that we need a lot of initial investment for that. Highway, bridges, dams. So huge investment is required for the public sector projects, and most of the time they are the large projects. But private projects, they can be large, but mostly they are medium to small. Estimated life of the public sector projects. Normally the public sector projects are long life projects. They have the life more than 30 to 50 years. So here we have to use the concept of the capitalized cost. Private sector projects, they are medium to small, and they have the shorter life normally. The range is very big here, 2 to 25, but normally the private sector projects are up to 10 or 15 years. Okay, but it can be, the life can be any. Life can be small, short, life can be long. But public sector projects, normally they are the long life projects. And whenever we have the long life project, we have to use the concept of the capitalized cost. Any student remember what is the capitalized cost? किसी को याद है कि नहीं? Capitalized cost होती क्या है? सर हमारी जो इनिशियल सीधा बात कह रहे हो दोबारा फिर? नो सर उज़ैर, the seer of the class. उज़ैर के अलावा कोई नहीं है? मुझे कॉल करना पड़ेगा. Normal 75. हारिस ऑनलाइन है. अयान, फरहान चौधरी, फरहान जी अयान, क्या होती है कैपिटलाइज कॉस्ट? सर कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो हमारे पास जो सरमाया होता है उसको हम कैपिटल या कैपिटल कॉस्ट कहते हैं. कैपिटलाइज कॉस्ट बेटा कंफ्यूजन है थोड़ी सी इसमें. वो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी ना आपकी. मोइन, आर यू ऑनलाइन? मोइन? यस सर. कैपिटलाइज कॉस्ट क्या? सर एक्चुअली ये प्रेजेंट वर्थ होती है एक लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट की, जिसका जो बहुत ज्यादा मतलब कि लंबा, उसको एनुअल वर्थ उसकी कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कर देते हैं. तो हमारे पास जो हमारे पास आ जाती है वो क्या कहते हैं, ईयर जीरो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको कैपिटलाइज कॉस्ट कहते हैं. थैंक यू मोइन, यू आर करेक्ट. व्हाट्स योर रोल नंबर मीन? सर 84. 34. Thank you. You are right that this is actually. Moin, can you see the slide or not? Slide आपको नजर आ रही है? It's not visible yet. Yes sir. आ गई है. आ गई थी, चले अब चल. आ रही है आपको? Yes sir. Okay, thank you. So capitalized cost is the present worth of the long life alternative. Here we can use the formula which we have discussed, we have tried. When n approaches to infinity, then we can simplify the relationship between P and A. So A is equal to P times I and P is equal to A over I. So we can use the concept of the capitalized cost to calculate the present worth or the annual worth, okay? Because the public sector projects are the long life alternative. And the reason why we can use this formula to calculate, why not the factors
if you know the exact number of years, then I will recommend you to use the factor because you will get the exact answer. But if the exact life is not known to you, then we can use this formula. Okay. So after 30 to 50 years, you can see the difference in the values of the factor that is relatively small. So as the n values go increasing, so difference in the A over P factor or P over A factor for different number of years, that will be a smaller. That's why we can use the simple relationship to calculate the P capitalized cost or the equivalent annual work, starting from 1 to infinity. So first is it requires a large investment, and the second is the life is very long, normally 30 to 50 years for the public sector projects. Then cash flows. What kind of cash flows we need for the calculations of for the analysis of that project? So if it is a private sector project, until now we have discussed the private sector projects in which we have the cost, we have the profit, revenues. So we call them inflows, outflows. Okay. What is the cost? What are the revenues? So by using those inflows and outflows, we have calculated the equivalent work. But here in the public sector projects, normally we don't generate the revenues. We can generate, but most of the time we provide the service to the citizens, because public sector projects are owned by the citizens and they are for the citizens. It's for the they provide the benefits. Sometimes we can generate the revenues. For example, we can collect the toll tax. If it is a highway project, we can generate in the alternative ways. But most of the time, there is no profit, no revenue. But we have to spend the money, we have to construct the facility, and at the same time, it will have some benefits to the citizen, provide benefits to the citizen. And whenever you construct the project, there's some disbenefit associated with that project. So in the public sector projects, we have the cost, the money which we have to spend on the construction of the project, and also on the operation and the maintenance of the project, and the benefits. Benefits, these are the advantages for the citizens. What benefits they are getting? Citizens, they are the owners, and they can get the benefits from the project. And sometimes we have undesirable or negative consequences because of the construction of that project, and they are the disbenefits. So we have the cost, benefit, and disbenefit in the public sector projects normally, and in the private sector projects, we have the revenues and the cost. And then project financing, funding. So the government can collect the taxes. They can also collect the toll tax. They can have the taxes on the gasoline, on different commodities. And for the public sector projects, definitely the private sector project, the private owner, they have to arrange their own money from the different resources. But for the public sector project, the government collect the taxes from the citizens. In Pakistan, you can say we have they are getting huge taxes on the gasoline. Also, they can have the GST, just like that. Okay, interest rate. For the public sector projects, the interest rate is relatively low. But for the private sector projects, interest rate is high because they don't have to pay the taxes on the public sector project to the government. So on the public sector project, the interest rate is normally low. And then the difference in the environment of the valuation. Public sector project, they are normally politically inclined. But if it is a private sector project, then most of the time the client look at the benefits or how much revenues they can generate from the project.
Even sometime the public sector project, they are not economical, but because of the political pressures, we have to construct. Our government has to provide the facility to the community because they have to re-elect it and by the votes of the public. So they have to provide the facility. So the public sector projects, most of the time, they are politically inclined, but private sector projects, they are primarily based on the economic factors. Then how can we calculate the benefit cost ratio? It's simply the ratio of the equivalent present worth of all the benefits divided by the equivalent present worth of all the cost. Simply the ratio of the benefit to the cost. It can be in the form of the present worth, annual worth, or the future. So present worth of the benefit to the present worth of the cost, annual worth of the benefit to the annual worth of the cost, or annual worth, the future worth of the benefit to the future worth of the cost. And what is the sign convention for the cost? Because this is a ratio. So we calculate the equivalent present worth of the cost separately, equivalent present worth of the benefit separately, and simply we take the ratio. So we will use the positive sign even with the cost. Okay. And how about the salvage value? We have two formulas. This is the conventional method. And okay, this is the conventional formula and then this modified formula. Okay. So salvage value, that is subtracted from the cost. So we have two methods to calculate the benefit cost ratio. First method is, our first formula is conventional benefit cost ratio. So it is the ratio of benefits minus the disbenefits, and then it is divided with the cost. Okay, difference between the benefits to the disbenefit, and then its ratio with the cost. So B minus D over C. This is the conventional formula to calculate the benefit cost ratio of a single project. And then we have the modified. Some scientists or some, you can say, the economist, they says that it's better to use benefit cost ratio, this formula. We can simply subtract the disbenefit from the benefits and can divide with the cost. Another idea is we can also subtract, instead of adding the initial cost in the denominator, we can subtract the maintenance and the operation cost from the benefits in the numerator. So only difference here in these two formulas is that in the conventional method, we have to add the maintenance and the operation cost in the denominator. But in the modified benefit cost ratio, we have to subtract the maintenance and the operation cost from the benefits. And what is the CM guideline? If the benefit cost ratio is greater than 1, the project will be economically acceptable. And if it is less than 1, less than or equal to 1, it is not accepted. Because in that case, benefits will be less than the cost. So benefit should be more than the cost. Whenever the benefit will be more than the cost, then that project is economically justified. Look at this example, very simple example. Who can read the statement? Any student? Just read the statement. Any volunteer? उज़ैर फिदा, इनके अलावा कोई नहीं है? मुबीन आपने पहले पार्टिसिपेट तो नहीं किया होगा मेरे ख्याल। मुबीन है मेरे पास, पोस्ट नहीं, मुबीन का नहीं है। मुबीन, कैन यू रीड द स्टेटमेंट? मुबीन हुसैन, आपको आवाज आ रही है मुबीन मेरी? जी सर आ रही है। बेटा आपका रोल नंबर क्या है? 86। Mubin, roll number 86. I am sharing with you. Okay, I hope you can see the slide. Please read the statement. It's very simple.
जी मुबीन, Okay, sir. नहीं नजर आ रही आपको अभी? Yeah, yes, sir. A flood control project will have a first cost of $1.4 million with an annual maintenance cost of $40,000 and a 10-year life. Reduced flood damage is expected to amount to $175,000 per year. Lost income to farmers is estimated to be $25,000 per year at an interest rate of 6% per year should the project to be undertaken. Thank you, Mubin. Okay, the first cost is $1.4 million. Annual operating cost is $40,000. Life is 10 years. Reduced flood damage is expected to be $175,000 per year. This is annual worth. So I told you already, this is the ratio of the present worth of the benefits to the present worth of the cost. So in the denominator and the numerator, the worth should be the same. You cannot divide the present worth to the annual worth. So you can divide the present worth of the cost to the present worth of the benefits. Sorry, present worth of the benefits to the present worth of the cost, or the annual worth of the benefit to the annual worth of the cost. But you cannot divide the present worth of the benefit to the annual worth of the cost. That will be wrong. The worth should be the same, both for the benefits and the disbenefits. Okay. So 175,000, this is per year. So this is actually the annual worth. Okay. And then loss to the farmers is estimated to be 25,000 per year. This is also the annual worth. Interest rate is 6%. Mubin, reduced flood damage is expected to be amount 175,000 per year. Is this benefit or disbenefit to the farmers? Reduced flood damage. ये क्या चीज है? Reduced flood damage. This is the benefit to the farmers. Okay, reduced flood damage. This is a benefit. So please, in this slide, one thing is missing. We should write $175,000 per year. This is the annual worth. Okay. Yes, sir. Although it's written here that annual worth term of the benefit cost ratio. So preferably you can write per year here. So benefit is $175,000 per year. And then loss of income to the farmers because of that flood control project, loss of income to the farmers. This is benefit or disbenefit? Mubin? Disbenefit, sir. Disbenefit है. कोई भी आप प्रोजेक्ट आप कंस्ट्रक्ट करते हो, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आपकी जो लैंड फर्टाइल नहीं रहती, ठीक है, तो वो जो ग्रोथ होती है आपकी क्रॉप की, वो दैट कैन बी अफेक्ट. सो लॉस ऑफ इनकम टू द फार्मर्स बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, it is $25,000 per year. So this is disbenefit. So benefit, reduced flood damage and loss of income to the farmers. This is disbenefit because of the construction of the project. And then cost. Cost, we have the initial cost and then we have the annual operating cost. But that should be in the same form. So we have $1.4 million. $1.4 million. The life of the project is 10 years. So we can convert it to the equivalent annual series over the life. This is in the year zero, $1.4 million. So benefit, this is in the form of the annual worth, this benefit, annual worth. So cost should be the annual worth. $1.4 million, we can convert it to the equivalent annual series over the life by using our P factor. And then cost, in the conventional method, cost is added to the initial investment. So we can, that is already in the form of the uniform series because this is the annual cost. So this is the total cost, benefit and disbenefit we have. So we can subtract the disbenefit from the benefit, and then we can divide with the annual worth of the cost. We have the benefit cost ratio, and this value is less than 1. So this project is not economical. Why? The net benefits are less than the overall cost of the project. So this project is economically not feasible. Is it clear, Mubin? Yes, sir. सर इसमें दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं. दोनों लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. You can use any one of the formula. ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया, you can select anyone.
In the next example, they have used both the formulas, both the techniques. Okay. Yes, sir. Then the example number 2. So in this example, you will see both the conventional method and the modified method. Both are used. ये मेरे ख्याल में हाँ उससे अगले एग्जांपल में यूज किया गया. Next example. So example number 2. Who can read the statement? Yes, sir. जी बेटा आपका नाम क्या है, रोल नंबर बताएं पहले अपना. Sir, 59. 59. Great. And your name, please. Hamama. Come on. जी बेटा. I'm sharing with you the slide. Just you have to read the statement. Okay, this one. The Bureau of Reclamation is doing an irrigation project of $1.5 million and maintenance of $25,000 per year. Agriculture revenue is expected to be $175,000 per year. It's a 20-year project at 6% per annum. Find, do a B over C analysis, rework the problem doing a modified B over C analysis. Okay, thank you. So it's the irrigation project. Initial cost is $1.5 million. Maintenance cost $25,000 per year. The revenue which the project can generate, it is equal to $175,000 per year. Life is 20 years. And the interest rate is 6% per year. We have to use the benefit cost ratio analysis to make the decision. And then we have to use the modified benefit cost ratio. So calculate the annual worth of the cost. This example is similar to the previous one. So what is the initial investment? It is $1.5 million. This is in the year 0. Again, I am telling you, you can use any worth for the benefit and the cost, but that should be the same. Either use the present worth of all the cash flows for the benefits and also the present worth of all the cash flows for the cost. Or you can use annual worth or the future worth. So in the denominator and in the numerator, the worth should be the same. So again, we are using the annual worth. So here the initial investment is in the year 0. We have to convert this initial investment to the equivalent annual series starting from year 1 to the year 20. So we can use our P factor. 6% is the interest rate, number of years are 20. And then annual operating cost is $25,000 per year. So this is the annual worth of the cost, $155,770 per year. This is the annual worth of the cost. And then annual worth of the revenues. The revenues which this project can generate is $175,000 per year. So this is $175,000 per year. Where are the disbenefits? It is necessary that all the times there should be some disbenefit from the project. We may have the disbenefits, we may not have the disbenefits. So if we don't have any disbenefit, so that is equal to 0. So in the numerator, we have benefits minus disbenefit divided by the annual worth of the cost, and this value is greater than 1. So by using the conventional benefit cost ratio, this project is economically justified because the benefit cost ratio is greater than 1. ये क्या वजह है? आगे जाओ या पीछे जाओ? Then we have to resolve the same problem by using the second method. Amama, what is the difference between the conventional benefit cost ratio and the modified benefit cost ratio? दोनों में difference क्या है? सर कन्वेंशनल कॉस्ट रेशियो में जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट में आ जाती है डिनोमिनेटर में, और जो मॉडिफाइड है उसके अंदर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो हमने बेनिफिट में से माइनस करनी होती है न्यूमरेटर में. You are right, absolutely right. So in the modified benefit cost ratio, we have to subtract the maintenance cost from the benefits in the numerator, but in the conventional method, we add the cost, annual operating cost to the initial investment. So this is a difference only. So we can calculate the cost. The cost is only the annual worth of the initial investment. And then in the numerator, we have to subtract the annual maintenance cost from the benefits.
then take the ratio, and the answer is 1.15. Previously, the answer was 1.12. So they are close to each other. By using both the methods, this project is economically justified. Thank you. Then we have another example, example number 3. Who can read this the statement of this problem? Let me see the students who are online. चौधरी फरहान, आपने पहले पार्टिसिपेट किया yesterday. मैं कह रहा हूँ बाकी लोग जो से हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं हाथ खड़ा किया है. उमर परवेज, उमर 87 रोल नंबर आपका? 76 सर. 76. 7 भी उम्र है मेरे ख्याल में. 76. जी उमर परवेज, आपने आपका रोल नंबर पहले लिखा हुआ है. चलें, कैन यू रीड द स्टेटमेंट? यस सर. चलें, 76 उमर. सर अभी शो नहीं हुई स्लाइड. मैं करवा रहा हूँ, अब आपको नजर आएगी. The Ford Foundation expects to award 15 million in a grant to public high school to develop new way to teach the fundamental of engineering that prepare students for university level material. The grant will extend over a 10-year period and will create an estimated saving of 1.5 million per year in faculty salaries and student-related expenses. The foundation uses a rate of return of 6% per year on all grant awards. This grant program will share foundation funding with ongoing activities, so an estimated $2 lakh per year will be removed from other program funding. To make this program successful, $5 lakh per year operating cost will be incurred from the regular MO budget. Use the B/C method to determine if the grant program is economically justified. Thank you, Umar. So please tell me, Umar, is this the project or no? ये project है भी कि नहीं? Is this the project on the foundation due to the grant? ये है सर. अच्छा, इसमें करना क्या आपने प्रोजेक्ट के डेफिनेशन में आता है कि नहीं? सर इसमें through this project you have to provide that training है ना? Yes sir. So that is a kind of service. Yes sir. और प्रोजेक्ट डेफिनेशन में किस तरह आ गया? इसका स्टार्टिंग टाइम भी होगा, एंडिंग टाइम भी होगा. एंडिंग टाइम भी दिया हुआ है. आपको रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे. So this is the project, ठीक है? So this is a public sector training project. Agree कर रहे हैं आप? Yes sir. Thank you. Thank you, Umar. So the initial investment required for this project is $50 million, and the grant will be extended over 10 years period and will create estimated savings of 1.5 million per year. So Umar, ये क्या चीज है? The grant will extend over 10 years period and will create estimated savings. Saving क्या चीज है? Because of this training project, there will be the savings of $1.5 million per year in faculty salaries and the student related expenses. So what is $1.5 million per year saving? ये क्या चीज है? Benefit है, cost है, क्या है? उमर? Yes sir. बेटा ये जो सा 1.5 million पर ईयर सेविंग है, इसको क्या कहेंगे हम? सर ये रेवेन्यू है, बेनिफिट है. This is the benefit. You are right. So initial amount required for this project is $15 million, and the savings $1.5 million. That is the benefit. Total time is for the project is 10 years. Interest rate is 6%. And this is important. This grant program will share foundation funding with the ongoing activities. So an estimated 200,000 per year will be removed from the ongoing funding, program funding. So ये क्या जो हुआ? From the ongoing program funding, $200,000 will be removed. तो ये क्या हुआ? Guess करो.
This benefit नहीं हुआ, $200,000 Sir, per year that will be removed from the current projects, running projects. So this is the disbenefit. What do you think? This benefit. Because of this project, we have to maybe we have to remove some amount that is $200 million per year from the running projects. So to make this project successful, and the running cost is how much? $500,000. So what is this one? This is the cost, operating cost or running cost. And we have to use the benefit cost ratio method. And we have to check this project or this program is economically justified or not. Look at here, annual worth of the investment. Investment is $15 million. This is in the year 0. The life of the project is 10 years. So initial investment is $15 million. We can convert it to the equivalent annual series by using our P factor. So this is the annual worth of the initial investment, then annual worth of the benefit. Annual worth of the benefit is the savings, $1.5 million per year, already in the form of the uniform cash flow series. And then we have to remove $200,000 per year from the running projects. So this is this benefit. And then 500,000 is the operating cost. So this is the operating and the maintenance cost. So benefit cost ratio, benefits minus this benefit divided by the total cost, annual worth of the initial investment plus the operating cost. So this is the ratio, 0.51. And then modified benefit cost ratio, we can subtract the annual operating cost from the benefits. So benefits minus the disbenefit minus the cost divided by the annual worth of the initial investment. And this ratio is the modified benefit cost ratio. So by using both the methods, both the formulas, both the techniques, the benefit cost ratio is less than 1. So this project is not economically justified. Even we can check the difference between the benefits and the cost. Definitely, the benefits are smaller than the cost. So this value will be with the negative sign. So whenever the difference between the benefit and the cost is with the negative sign, it means cost is more than the benefit. That project is not economically justified. Okay. So you are getting the same results by using different techniques. So benefit cost ratio methods, they are for the single project. Okay. Conventional benefit cost ratio or the modified benefit cost to evaluate the single project. So when we have two projects, okay, benefits and costs for those projects, they are different. They are not the same. Then how can we say that which project is more economically justified? That we use the incremental benefit cost analysis. ठीक हो गया? So just I will read this one procedure. We will solve the example, and then we will discuss the procedure again. So the method is we have to calculate the equivalent total cost for both the alternatives. We have two alternatives. Cost is different for these two alternatives. So simply calculate the equivalent total cost for both the alternatives. And then we have to order the alternatives by the equivalent total cost. First smaller, then the larger. Definitely the cost will be different. So we have to arrange the projects with the smaller cost first and then the larger cost. And then we can calculate the difference in the cost, delta C. This is the incremental cost. How much is the how much more we have to spend on the project which has the larger cost. So delta C is simply the difference between the cost of these two projects. And then we calculate the incremental benefits. Definitely, if we are spending more on any project, we are expecting the more benefits from that project. इसी तरह ही ना किसी पे ज़्यादा spend कर रहे हैं, so we are expecting that the benefits should be more from that project. So we have to calculate delta B. Delta B is simply the difference in the benefits, net benefits of the two projects, and then calculate delta B minus D, benefits minus these benefits.
and at the end we calculate the ratio of the incremental benefit to the ratio to the incremental cost by using this ratio, this formula. This is equal to incremental difference between the benefits and the disbenefit divided by the incremental cost, or the difference of the cost. If the incremental benefit to the incremental cost is greater than 1, then the larger cost project is economically justified. And if the incremental benefits to the incremental cost is less than 1, then the low cost alternative will be selected. ठीक है, एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ सिंपल वर्ड्स में. आपने करना क्या है, you have to calculate the cost for both the projects. ठीक है, दोनों को कैलकुलेट कर लिया, then calculate the difference of the cost. After that you have to calculate the difference of the benefits and the disbenefits, extra benefits which we are getting from the larger cost project, and then take the ratio of extra benefits which we are getting for the larger cost project to the extra cost, and then we have some value here. If this value is greater than 1, then the larger cost project is justified, and if this value is less than 1, then the lower cost alternative will be justified. I think it will be more clear to you from the next example. Let's solve the example, and then we can discuss it again. If you have some confusion, it will be clear to you from that example. So we have the example number 4. Who can read the statement for this example? I think one student has raised, Chaudhary Farhan. And then Jawad. Jawad, आप पहले तो नहीं आए मेरे ख्याल, आपने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया होगा. जवाद, आपका रोल नंबर क्या है? पहले भी परफॉर्म किया, पहले परफॉर्म किया हुआ है. जवाद आपका, हाँ लिखा हुआ है 70 रोल नंबर आपका. जवाद आपका 70 रोल नंबर है. जवाद रोल नंबर तो बता दो. उसामा. यस सर. क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम शुक्र. आप सुनाएं. आपने भी हाथ खड़ा किया है और आपका नाम पहले नहीं लिखा हुआ. आपका रोल नंबर क्या है? 96. उसामा जी. उसामा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? खैरियत से है? हाँ खैरियत से है. बेटा कहाँ पर होते हो? कौन सी जगह पर हो? सर लाहौर में हूँ. आप लाहौर में ही है, करीब ही है. चले ठीक हो गया. इट्स ओके. So please read this statement. 2 routes are under construction. The route X is 25 km and the cost is 21 million. The route Y is 10 km and the cost is 45 million. Maintenance is $40,000 per year for route X and $15,000 for route Y. Additionally, resurfacing will require every 10 years of a cost of 10% of cost of each year, and the volume of traffic is 4,000 vehicles, 4 lakh vehicles per year. The operating expenses is assumed to be 0.35 km and time saving for the route Y is estimated to be $9 lakh per year. Take I 6% per year and infinity life. Okay, thank you, Soma. So we have 2 routes for the construction, possible routes. First route for the road, I think this is a road project. So first route is 25 km long. Okay. Its initial cost is $21 million. Route Y is 10 km long and its cost is $45 million. Osama, why the initial investment or initial cost of the route Y is more than the route X, although the total length of the road for the route X is more than the route Y. Y की cost $45 million है, route Y की, route X की $21 million है. उसकी लेंथ 25 किलोमीटर, इसकी 10 किलोमीटर है. रीजन क्या हो सकता है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, वैसे इंजीनियरिंग से कोई रिलेशन नहीं है इसका. ये भी है. We have 2 different routes. ठीक है.
दो सड़कें बनानी है ना, एक रूट हो सकता है कि शहर के अंदर से जा रहे हैं, एक बाईपास कर रहे हैं एक बार से जा रही है सर। हाँ, अब बताओ, थोड़ा सा मैं हिंट दे दिया आपको। Why the सर cost हो of the सकता route y is more than the cost of the route of route x? सर हो सकता है वो ब्रिज हो। जी बिल्कुल, उसमें ब्रिजेस ज्यादा हो सकते हैं, डिफिकल्ट यस रूट सर। हो सकते हैं, हमें कटिंग करनी पड़ सकती है। So it's quite possible that for the route y the cost can be more than the other route, ठीक है? तो इट्स अ डिफिकल्ट रूट, इसमें ब्रिजेस हो सकते हैं, कोई आपके वाटर बॉडीज हो सकते हैं, इस कंस्ट्रक्शन करनी पड़, कुछ कटिंग करनी पड़ सकती है आपको, ठीक है? So it's quite possible the cost may be more for the route which has less length. Anyhow, यस सर। route Y has 10 kilometer reach and route X has 25 kilometer reach. Initial cost for the route X is $21 million, and the initial investment required for the construction of the route Y is $45 million. ठीक हो गया? Maintenance cost is $40,000 per year for the route X and $15,000 for the route Y. Maintenance cost be given है. For the route X, the maintenance cost is more than the route Y. Additionally, resurfacing will be required. Resurfacing will be required every 10 years at a cost of 10% of the first cost of each route. आपको क्या करना है? Resurfacing every 10 years. So what kind of this cost is? Recurring है, non-recurring? सर रिकरिंग है। ये recurring है. Every 10 years you have to spend the money for the resurfacing, and that value, that is 10% of the initial investment. Volume the traffic is given. जो भी रोड सड़क बनेगी, 400,000 vehicles use that route or road. Operating expenses is assumed to be 0.35 kilometer per meter, $5 per kilometer. And time saving, दो चीजें हैं. सेविंग किस तरह हो रही है? एक तो पेट्रोल कम लगेगा, ठीक है? रूट की लेंथ छोटी है, you can save your time and you can also save your petrol, the gasoline. So this is the benefit. What do you think, Usama? यस सर। अगर आपने 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल करना है, 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो आपकी जो ट्रेवलिंग टाइम भी रिड्यूस होगा और आपकी जो फ्यूल की सेविंग भी होगी. So this is the benefit. यस सर। ठीक है? Interest rate is 6% per year. So we have to decide that which route is better, which route is economical. Okay? यस सर। So here we will calculate first the cost of each route. Okay, annual cost of the route X. For the route X, the initial investment is $21 million. Okay, $21 million. So life is infinity. It's not given. So whenever the life is infinity, we can use the concept of capitalized cost. So annual operating cost, that is in the form of the annual cash flow series. ठीक है ना? हर साल आप करने हैं. That is already in the form of a uniform cash flow series. So we can write $40,000 as it is. But $21 million, this is the initial investment, and we can convert it to the equivalent uniform annual cash flow series by using the formula P into I. Okay? A is equal to P into I. So by multiplying with the interest rate, we will have the uniform cash flow series starting from 1 to infinity again. So this is the equivalent annual worth starting from 1 to infinity. Operating cost already in the form of the uniform cash flow series. How about the resurfacing? Resurfacing क्या है? Sama? सर 10% ऑफ फर्स्ट नहीं बेटा, आपने ये बताया था मुझे रिकरिंग कैश फ्लो है. ये बताया था ना? After every 10 years. Yes, sir. So what is the procedure to find out the equivalent annual series for the recurring cash flows? We calculate the equivalent annual worth for the recurring cash flow only for one life cycle. ठीक है? क्योंकि फिर 20 में एक और इस तरह की रिसर्फेसिंग करनी है. सेकंड लाइफ साइकिल में अगेन यूनिफॉर्म कैश फ्लो सीरीज होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 11 to 20. थर्ड में क्या होगा? थर्ड लाइफ साइकिल में वो रिकरिंग कैश फ्लो 30 भी होगी. अगेन वी विल हैव द यूनिफॉर्म कैश फ्लो सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 to 30. तो आपने क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट द रिकरिंग कैश फ्लो ओनली फॉर टू द इक्विवेलेंट एनुअल सीरीज ओनली फॉर one life cycle.
लाइफ साइकिल। यहाँ आपने आई से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये रिकरिंग कैश फ्लो है, तो यू हैव टू यूज ए और एफ फैक्टर। ए और एफ फैक्टर क्यों यूज करें? सर हमने फ्यूचर वैल्यू हमें पता है ना, तो हम इसे एनुअल में कन्वर्ट कर लेंगे। You are right, Osama. This Yes, sir. recurring cash flow is at the Tenth year. in the last year of the first life cycle. Yes, Or sir. year end of the first life cycle. ठीक है? इसका मतलब ये फ्यूचर वर्थ है। इसको आपने क्या यूज करेंगे? You will use your F factor to convert it to the equivalent annual series starting from year 1 to 10. ठीक है? Yes, sir. So you have converted this resurfacing cost to the equivalent annual series starting from 1 to infinity. Actually, you are calculating the, आप देखें ना यहाँ पे 40,000 1 to infinity है, ये भी 1 to infinity है, तो इसको भी तो 1 to infinity होना चाहिए। लेकिन वो यानी उसकी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अगर वन लाइफ साइकिल के लिए जो एनुअल वर्थ होती है वो 1 to infinity भी वही होती है। तो फॉर मल्टीपल लाइफ साइकिल वी हैव द सेम वैल्यूज, वी कैन ऐड दिस वैल्यू टू द अदर एनुअल वर्थ। So this is the equivalent annual worth for the root x. Is it okay? And so you have to convert all the cash flows to the equivalent series. Okay, for the root x. By using the same procedure, we can calculate the equivalent annual worth for the root y. $4.5 million. Interest rate is 0.06. Annual operating cost is $15,000, and then you have to spend 10% of the initial investment on the resurfacing of the deck or the road after every 10 years. So again, we can use A over F factor, and these are the answer. Annual worth of the cost for the root y, annual worth of the cost for the root x. So which root has the larger cost, larger annual worth of the cost? Root x or y? Sir, why? Y की ज़्यादा है. So next step is we have to arrange them in the order so that we have the smaller first and the larger later, and we can find out the difference in the cost. So simply the annual worth of the larger cost alternative minus the annual worth of the smaller cost alternative, and this is the difference. And this is, what is this one? This is delta C, incremental cost. इसका मतलब है this much money you have to spend more on the larger cost project. Y पे इस रूट पे इस क्या कहते हैं Y project पे Y alternative you have to spend this much money, more money than the root X. ठीक है? अगर Y कंस्ट्रक्ट करोगे तो इस इतनी आपको ज्यादा स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? Now we will calculate the benefits. What are the benefits? उसामा, benefit क्या था? सर एक तो दो हमारा benefits बताए। सर एक टाइम सेव हो रहा था और दूसरा सर फ्यूल सेव हो रहा था। फ्यूल सेव था और टाइम सेव था। यस सर। जो टाइम सेविंग है उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है? इस Yes. we have calculated, इसका मतलब क्या हुआ? 900,000 की किस तरह कैलकुलेट किया है? गेस तो करो थोड़ा सा। ये सारे ज्यादा चीजें गेस कर रहे हो। Time saving for the root y, they have given the value $900,000. यस सर। किस तरह कैलकुलेट, अगर आपने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करनी है तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अगर पब्लिक को टाइम सेविंग होगी, टाइमली क्लास लेंगे, टाइमली ऑफिस पहुंचेंगे, टाइमली फैक्ट्री पहुंचेंगे, वो काम ज्यादा करेंगे कि नहीं? यस सर। कंजेस्शन नहीं होगी ट्रैफिक पे, टाइमली वो अपनी नींद भी पूरी करेंगे। So Yes, sir. we have different methods to calculate this time saving in the monetary term. Okay, they have given the values, but we have to have the techniques. ठीक है? पब्लिक अगर वो ज्यादा काम करेगी तो गवर्नमेंट को फायदा होगा ना, मुल्क को फायदा होगा। So Yes, sir. this is the benefit of time saving, and then we have to calculate the benefits of the fuel saving. Both given है। Fuel saving कितनी है? देखते हैं। What is the length of the root x? कितनी है? सर 25 किलोमीटर। Length of the route for the length of the route x is 25 kilometer, and length of the route y 10 kilometer. कितनी सेविंग है? 15 किलोमीटर लेस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर रूट y आप कंस्ट्रक्ट। तो 25 minus 10, ठीक है जी? 25 minus 10, this is 15.
15 किलोमीटर आपको कम ट्रेवल करना पड़ेगा. So what is the cost of the fuel per liter? It is 0.35 dollars per liter. And how many people are using? How many vehicles are passing to that road? There are 400,000 vehicles. 400,000 vehicles per year. So we can multiply 400,000 with the cost of the fuel, with the length saving, and then we can add the time saving cost, and this is the net benefit. This is the extra benefit. This is the extra benefit if we will construct the route Y. So we have the incremental benefit, we have the incremental cost. Now divide the incremental benefit to the incremental cost, and the answer is more than 1. इसका मतलब क्या हुआ? सर वाई को बिल्ड कर दिया जाए. करेंगे, वजह क्या है, रीजन क्या है, वाई को कंस्ट्रक्ट करेंगे? क्योंकि सर एक्स्ट्रा लार्ज कॉस्ट, एक्स्ट्रा हमारी कॉस्ट है, बेनिफिट उससे ज्यादा है. Yes sir. Benefits which we will have from the second alternative, they are more than the extra cost we will have on the route Y. Do you agree? Yes sir. तो नहीं Yes है. sir. No Now sir. can you repeat the procedure? अब आपको समझ लगी हो procedure क्या होगा? In 2-3 lines. सर पहले हम एनुअल कॉस्ट फाइंड करेंगे रूट वाई के लिए, रूट एक्स के लिए, उसके बाद वाई के लिए उनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें. यस सर. इसी तरह रूट कॉस्ट कैलकुलेट कर लें. सेकंड स्टेप क्या होगा सर? उसके बाद हम एक्स्ट्रा कॉस्ट फाइंड करेंगे. एक्स्ट्रा कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे. यस सर. टेक्निकल टर्म में इंक्रीमेंटल कॉस्ट. देन यू विल कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट. सिंपली यू कैन सबट्रैक्ट द लार्जर कॉस्ट फ्रॉम द स्मॉलर कॉस्ट प्रोजेक्ट. ठीक है? सो वी हैव डेल्टा सी, and then we will calculate benefits, the incremental benefit, extra benefit from the larger cost project. ठीक है? जो extra benefit आ रहे हैं उसको calculate कर लें. That will be delta B, and then divide the incremental benefit with the incremental cost. Incremental benefit, incremental cost. If this value is more than 1, then the larger you have to go with the larger cost project, and if it is less than 1, then we have to select the स्मॉलर कॉस्ट. ठीक हो गया? यस सर. अच्छा, इसमें बेनिफिट्स हैं. समटाइम्स वी आल्सो हैव द डिसबेनिफिट. अगर आपने लार्जर कॉस्ट करना है, उसमें डिसबेनिफिट होंगे, उसको आपने सब्ट्रैक्ट भी कर. ओके, so disbenefit from the route Y, we don't have any disbenefit, extra disbenefit. So only we have the extra benefits. So disbenefits, they are equal to 0. So we can divide the incremental benefit to the incremental cost. Okay. Do you have any question now about this chapter first? जी जनाब. ये हाथ खड़ा है किसका है? एक तो नहीं है, पीछे कर लिया. Any question? I think this chapter is easy, not so difficult. 2 students have is Fida जी. जी फिदा बट. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर इसी प्रोजेक्ट का जो हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया, इसको पब्लिक प्रोजेक्ट ना समझे, प्रोजेक्ट समझें, तो उसमें फिर वो टाइम सेविंग वाले बेनिफिट्स वगैरह तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक जो बंदा उसको तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसने टाइम सेव करा. पब्लिक का प्रोजेक्ट होगा ना, प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट होगा, फिर आपका एनालिसिस का प्रोसीजर डिफरेंट होगा. क्योंकि जो भी प्राइवेट पार्टी है वो प्रॉफिट के लिए करती है काम. ठीक है? प्रोजेक्ट तभी वो इनिशिएट करेगी जब उसने प्रॉफिट जनरेट करना है. तो वो यूज करेगा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. कितना उसने स्पेंड करना है, कितना उसने बेनिफिट देना है इन मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है? तो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट हैव द डायरेक्ट रेवेन्यूज. उनके लिए ये प्रोसेस नहीं होगा ना. एनालिसिस का प्रोसीजर डिफरेंट होगा ना. कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, उसके रेवेन्यूज वहां से जनरेट होंगे, वो इतना टू टैक्स ज्यादा होगा कि उसके कॉस्ट को वो कवर कर सके. ठीक है? तो उसका मेथड प्रोसीजर डिफरेंट होगा. पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट का और प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट का डिफरेंस यही है. ठीक है? इसमें सर्विसेज देते हैं, फैसिलिटी देते हैं सिटीजंस को. उसमें जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वहां पे रेवेन्यूज जनरेट करना. तो दिस इज अ उसको कर सकते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट. अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट में है
तो वो देखेंगे रेवेन्यूज क्या है, तो कॉस्ट रेवेन्यूज के टर्म्स में जिस तरह हमने पहले किया उस तरह वैल्यूएट करेंगे, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कमर सर ये जो भी हमने लास्ट एग्जांपल की है इसमें हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात उसने की है, तो एक सेकंड आपका रोल नंबर क्या बेटा? 73। 73। चलो अब पूछेंगे। सर ये जो हमने लास्ट एग्जांपल की है इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट को उसने कहा $0.35 पर किलोमीटर, तो हमें उसमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूल कंजप्शन की बात कर रहे हैं या उस सेंस में ले रहा है? नहीं, वो उसने गैसोलीन की कॉस्ट बताई है, ठीक है ना, वो फ्यूल की कॉस्ट बताई है पर किलोमीटर जो से है ना, जो व्हीकल यूज करेगी पर किलोमीटर जो कॉस्ट है फ्यूल की, दैट इज द कॉस्ट। कितनी व्हीकल्स यूज यानी उसको यूज कर रही हैं और उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी, यानी 400,000 व्हीकल्स ट्रेवल कर रही हैं, 15 किलोमीटर की सेविंग है, ठीक है, 15 किलोमीटर लेस ट्रेवल करेंगी और सेविंग, टोटल सेविंग कितनी होगी, इसको आप यानी फ्यूल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल सेविंग आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आ जाएगी बस। ठीक हो गया। ठीक जी, एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? One more student has raised the hand. Yeah, Mohsin. डिफरेंट पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की मदद से कि उनसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो वो लेट भी हो जाते हैं अक्सर, तो इनको गवर्नमेंट को फिर बाद में उनको सब्सिडाइज भी करना पड़ता है उनके लिए। तो ये क्या ज़रूरी है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से वो बनाने हैं या खुद ही इन्वेस्टमेंट करके बना लें? इससे अच्छा तो ये नहीं होता? नहीं, आपको अगर आपके पास पैसे हैं ना, वही है चीज आपकी, अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, यू कैन यूज द मनी, अदरवाइज यू हैव टू बोरो द मनी, यू हैव टू अरेंज द मनी फ्रॉम द आउटसोर्सेज, ठीक है। तो व्हेनेवर यू बोरो द मनी यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो वो ये नहीं, अगर तो आपके पास पैसे हैं तो आप बोरो नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो आप बोरो करेंगे, ये तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास और ऑप्शंस हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैं, उसके बाद हमारे पास होता है टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जिस तरह मोटरवे बना था आपका कि जो यानी प्रिंसिपल है उसने कंस्ट्रक्शन की है, वो यूज करेगा फैसिलिटी को, later on they can collect the revenues and after some time, maybe after 10-20 years they can return the project to the owner, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास प्रोक्योरमेंट मेथड्स हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बनाना है, या तो उसके पास पैसे हैं या नहीं है, अगर पैसे नहीं है they have to arrange the money, and if they have to borrow the money from outsource, then they have to pay the interest. Use it. सर हमारे पास जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फिर हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मतलब जो है वो देख के उस हिसाब से फिर वगैरह करेंगे। बेटा उसमें भी होते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या होगी, उसके बाद उसमें भी इसी तरह ही है, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ यानी परसेंटेज यानी गवर्नमेंट पे करती है, उसके पास पैसे हैं, रिमेनिंग वो अरेंज कर रही है, और जो आपका प्राइवेट है ना, क्या कहते हैं, ओनर्स हैं, वो देखते हैं उनको रेवेन्यूज, वो जो उनको बेनिफिट्स क्या होगा कंस्ट्रक्शन करने के बाद, वो टूल टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली दे हैव टू पे द मनी। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है किसी प्रोजेक्ट में, दे आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न द मनी फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। यानी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते नॉर्मली, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो प्राइवेट पार्टीज को वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो उनको आपने पे करना है, रेवेन्यूज आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे टैक्सेस को। जी मौसम। Motion. Okay. Any other question? You don't have any question?
अच्छा जी, एक this may be the last question. राकिब जी, राकिब सर ये बॉन्ड्स क्या होते हैं और कैसे यूज होते हैं? बॉन्ड्स कैसे यूज होते हैं? सर ये जो बॉन्ड यूज होते हैं, बॉन्ड से यानी एग्रीमेंट होता है ना, बॉन्ड आपका कह लें जिस तरह आपके सर्टिफिकेट होते हैं आपके, ठीक है ना, यानी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। आपने गवर्नमेंट से यानी सर्टिफिकेट ले लिए या बॉन्ड ले लिए, तो वो आपको इंटरेस्ट पे करती है, वो आपकी श्योरिटी होती है ना, ये आपने इतनी जस्ट लाइक यू आर पुटिंग योर मनी इन द बैंक, यू कैन बाय द सर्टिफिकेट, यू कैन बाय द बॉन्ड्स, उस पे आपको वो इंटरेस्ट पे करेंगे। इन्वेस्टमेंट है, दिस इज यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट। ये उसी तरह है, आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, या सर्टिफिकेट लिया हुआ है या बॉन्ड्स लिए हुए हैं, ठीक हो गया। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन देन जी जी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, देन वी कैन कंक्लूड टू दिस लेक्चर। दिस इज द एंड ऑफ द इकोनॉमिक पार्ट। ओके, now how can you submit the assignment? Uzair, are you online? Yes sir. जी बेटा, तो आपने जितनी एग्जांपल्स हैं नंबर आई थिंक 5, 6 and 11 में हमने 5, 6, 11 किया और टुडे 9, तो इन चैप्टर्स की जितनी एग्जांपल्स हैं वो आपने रजिस्टर पे करनी है। रजिस्टर पे करने के बाद हैव टू हैव you can say you have to scan that all the pages and you have to make one file, PDF file, ठीक है, small assignments की। तो जैसे सारे स्टूडेंट्स आपको जमा करवाएंगे और आप फिर लेट फाइनली मुझे जमा करवाएंगे, ठीक है। सर ये कब तक करवा रहे हैं हम? टाइम सेट कर लेते हैं। इसके अलावा 4 या 5 क्वेश्चन जिसमें आपके रोल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे ना, मैं अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, इस वीकेंड में बनाने के बाद उसके आपने उसके साथ ही जमा करवाना है। नेक्स्ट वीक में आपका मैडम अक्सर लेक्चर लेंगी कि आपका लेक्चर ये पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कब तक जमा करवा सकते हैं असाइनमेंट? 21st इज ओके, यू विल हैव ऑलमोस्ट 2 वीक, ठीक है। तो मंडे को आपने सीआर को जमा करवानी है, ठीक है। ऑल द एग्जांपल्स फ्रॉम द 4 चैप्टर्स, ठीक है, उसको आपने स्कैन करना है, उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है, उसका नाम आपने लिखना है योर नेम एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। असाइनमेंट, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये उस फाइल का नाम होगा, और आपने सीआर को मंडे तक जमा करवानी है, मंडे 20th। उज़ैर आप मुझे 21 को जमा करवा सकते हैं फिर? यस सर, आई विल सेंड इट टू यू। और इसके अलावा उज़ैर मैं अपलोड कर दूंगा आपको एक असाइनमेंट और जिसमें आपके रोल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे, वो भी आपने साथ ही जमा करवाना, ठीक है। ओके सर। जैसे 1 या 2 क्वेश्चन जिसमें रोल नंबर्स इन्वॉल्व होंगे ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें, और वो भी आपने इसके साथ ही जमा करवाना, ठीक है। तो लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट 21st तक आपने जमा करवाना। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, एंड अगेन स्टे होम, स्टे सेफ। इंशाल्लाह एग्जाम में शायद हम वैसे मिले, फिजिकली मिले, ठीक हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।